Good morning, everyone. So today we will be starting with the revision session of the subject Salesforce Management. I hope the presentation is visible to you all. No, ma'am. Presentation is not visible, so I'll just share the presentation with you guys and let me know once it is visible. Is it visible now? No, ma'am. It is not visible. No, ma'am. Okay, just a moment again. अभी visible है? No, ma'am. Is it not? Okay, just give me a moment. अभी भी नहीं visible? No, ma'am. Okay, let me just share it on my Google Drive. हम इंटायर स्क्रीन करिए तो हो जाएगा हो sharing. गया अभी दिख रहा है? हाँ, yes, ma'am. ठीक है. Okay, so दिख रहा है ना सबको? Yes, ma'am. ठीक है. Ma'am, am I audible to you? Yes, you are. Good morning, ma'am. Ma'am, we haven't got the PPTs you shared. Yeah, like you told that you would be sharing in Teams, Okay, but I'll we share have. it. I have already shared, but I'll share it again if you have not got it. So let us focus on today's class first. ठीक है, तो इसमें majority of your doubts I hope will be cleared. But again, in case you have any other doubts, definitely I'll share the PPTs, and this is the class wherein you could resolve maximum of your doubts, right? So we have all covered the Salesforce management as a subject in the PCP classes and the online classes, right? So one by one today, we are going to revise, we are going to touch upon the important topics, and we are going to discuss, right? So I'll share the modus operandi, how these 4 to 5 hours we are going to engage, इसको हम कैसे करेंगे. So firstly, I have divided the whole class into 2 sessions. So first session will be from 11 to 1, then we'll have a break of 1 hour, and then from 2 to 4, right? And in these sessions, in the next section, in the second session, I will be taking up any queries, any questions which you guys have, जो कि अभी हमने रिवीजन क्लास में किया है, या कोई और ओवरऑल आपको एसएलएम से रिलेटेड, किसी सब इस टॉपिक से रिलेटेड, सेल्सफोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड, इफ यू हैव एनी डाउट्स, वी आर गोइंग टू टच अपॉन दैट. And I'll be also discussing some questions with you, how to attempt those questions, how to attempt those cases, right? So second half में हमारा मोड वो रहेगा ज्यादा कि how to attempt the paper. I will be telling you about the important questions, किस तरह से present करना है, किस तरह से लिखना है. We'll also be doing some practice questions. So what you can do, you can take a paper and a pen handy in the next session after the lunch, so that you can just do it and we can discuss it here, and move ahead with the exam, the
the similar things in the examination. I hope this pattern is clear and comfortable for all of you. Okay, so let us begin. So first and foremost, again मैं आपको एक अपना सिलेबस हम स्टार्ट करते हैं, अपने सिलेबस से स्टार्ट करते हैं. आई एम गोइंग टू शेयर द सिलेबस विद यू ऑल सो दैट वी नो कि हमें क्या क्या पॉइंट्स टच अपॉन करने हैं आज के सेशन में, आज के रिविजन सेशन में, राइट. सो बिफोर आई मूव ऑन विद द क्लास, लेट अस फर्स्ट have a look at the syllabus also, right? So I hope you see the slides. Do you see the syllabus? Yes, ma'am. ठीक है, तो हम लोग we will be talking in today's session. We will be talking about personal selling, marketing strategy, sales management, personal selling, salesmanship, selling objectives, marketing LinkedIn policies. Then we are going to talk about organizing, staffing, and training the sales force, sales organizations, directing sales force operations. How do you motivate and compensate the sales people? We will be talking about sales meeting, contests, sale quotas, sale territories. Also, we would be talking about how do I evaluate and control my sales effort, the budget, analysis of sales volume, profitability, and evaluating of persons. So हमने जब पढ़ा भी था ये subject when we were studying the subject as well. So and you could see the content of the subject. So this subject is a very scoring subject for you. It has a lot of practical orientation. So when I say it has a lot of practical orientation, that does not mean कि इस पेपर में आपके पास numericals आएंगे. No, but these things, the sales personals, and many of us, we are also working in organizations. So sales is an imperative part of each and every organization. So or otherwise अगर हमने sales करी भी नहीं है, we have experienced it, we are consumers, so we have experienced it in one form or the other, right? So this is going to be a very practical subject. It is a easier subject, so you can score well in this subject. If I talk about the number of units, number of people that who are there in the number of chapters which are there in the subject, it is also not a very verbose subject. So for you guys, it would be a easier subject if you do the basic concepts, understand the basic concepts, and if you are able to apply those concepts in the examination and write it well, it is a easy paper for you all and a very important paper from the perspective of marketing. ठीक है? I hope all of you have your SLMs with you also, because in the second half we'll also have a run through the SLMs, right? So once again, I'm sharing my slide with you all. Now moving on to the very basics. What is sales management? Can anyone define what is sales management? Sales management क्या होता है? So sales management is nothing but it is the management, planning, and the direction and control of your personal selling. And it is a very important segment. बहुत important होता है. क्या क्या include करता है? It involves recruiting, selecting the right set of people for the sales, and equipping them, assigning them, and routing them, and supervising them, and at the same time paying motivation to them, and giving them the requisite motivation compensation, right? So this is sales management for us. Okay, now before I move ahead, here we are talking of the term personal selling. What is personal selling? Can anyone of you explain? Personal selling क्या होता है? What is personal selling? Okay, moving away before it also, what is promotion mix?
प्रमोशन मिक्स क्या होता है? What is a promotion mix? So I'll just recapitulate the promotion mix for you. Promotion mix consists of all the elements wherein a marketer is using those elements to promote, to communicate their products, to communicate their offerings to the customers. So उसके बहुत सारे elements होते हैं. Advertising, we talk about public relations, we talked about sales promotion, we talked about personal selling. ठीक है, तो पर्सनल सेलिंग में क्या होता है? देयर इज अ वन टू वन इंटरेक्शन ऑफ द कंपनीज spokesperson who is doing the selling part to the set of consumers, right? तो जब हम सेल्स की बात करते हैं, we are focusing on the personal selling aspect of your promotion mix, and it is a very important and a very what do I say, very important and a very मेजर पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन मिक्स. अगर हम आज के बारे में आज के टाइम पे बात करें, इन द इंडियन इकोनॉमी और आउटसाइड ऑफ द इंडिया, sales, personal selling and selling the products to the personal selling, it contributes a maximum portion of your revenue. So to manage those personals, क्योंकि अगर आप देखोगे किसी भी organization में there would be a lot of people who are involved in the personal selling. So we need a proper management of the sales force. And how do we manage those personal sellers? That aspect of the promotion mix, we do it through sales management. So किस तरह से हम उसकी प्लानिंग करेंगे? What is the direction? What is the control? And it includes a lot of things. How do I recruit the right set of people? How do I select those right set of people who are there in my organization? उसके बाद हम उनको equip कैसे करेंगे with the requisite skills, with the requisite product knowledge? How do I assign the specific roles to them? How do I compensate them? And motivating the sales force is a very important task for the sales manager and for the whole organization itself. Okay, so this is about the sales force management, what it is. Now next comes the objectives. सेल्स फोर्स मैनेजमेंट के थ्रू हम क्या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हमें वॉल्यूम्स को, सेल्स वॉल्यूम को, वी नीड टू अचीव दो स्पेसिफिक टारगेट्स व्हिच द ऑर्गेनाइजेशन हैज set for me, right? So if I am part of the Salesforce team, if I am a sales manager, सबसे पहला टास्क, प्राइमरी टास्क होता है कि हमें रेवेन्यू जनरेट करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. That would help in continuing the profits, continuing the growth. And जो भी हमारा रेवेन्यू का है, जो हमारा विजन है ऑर्गेनाइजेशन का, इट इज मेजरली डन बाय द टॉप मैनेजमेंट. इट इज द टॉप मैनेजमेंट which helps in delegating the what do I say, the targets, the volumes to the marketing team, to the sales team. And then it is the top management has a certain vision which it delegates to the marketing team, and the marketing team further delegates it to the sales team. So this is how the hierarchy goes in. So I hope यहाँ तक सबको clear है. Any doubt till now? We have talked about personal selling till now. We have talked about the promotion mix. Just a recapitulation of the promotion mix. उसका major component होता था हमारा personal selling. उस personal selling को control करने के लिए we started up with something which is known as Salesforce management. So अभी तक हमने discuss किया कि what is Salesforce management and what are the objectives of the sales management and the Salesforce management. I hope this is clear to you all. यहाँ तक किसी को कोई doubt है? ठीक है. So now again, when we talk of a sales team, so sales team has to coordinate. The sales manager, the sales team, the sales force department of the organization has to coordinate with the production department, with the advertisement department, and the human resource development. So it is like a coordinator between all the departments, and they're all coordinating with the sales department. And again, advertising and sales,
they are interlinked with each other. There has to be a strong link, strong correlation between advertising and sales. So can anyone just unmute and tell me कि advertising and sales क्यों इतना linked है, क्यों इतना coordinated है, क्यों इतना important है, link क्यों important है दोनों के बीच में? Ma'am, as advertisement is a kind of introduction of the product, so the more versely and more efficiently you will advertise or introduce your product to the market, the more its sales would be increasing, and vice versa. If the sales are increasing, it would be marketed and advertised automatically. Very good, very good. So एज तुषार राइटली सेट कि एडवर्टाइजिंग क्या करता है, एडवर्टाइजिंग का रोल रहता है कि जो भी मेरा प्रोडक्ट है, जो भी मेरी सर्विस है, उसकी इंफॉर्मेशन हम कस्टमर तक पहुंचाएं. एडवर्टाइजिंग के थ्रू बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होती है. हमारा कोई सेल्स है, कोई प्रमोशन एक्टिविटी है, कहीं डिस्काउंट्स हैं, तो दैट आर ऑल कम्युनिकेटेड टू द सेट ऑफ कंज्यूमर्स थ्रू द एडवर्टाइजमेंट, राइट? सो अगर एडवर्टाइजमेंट है किसी भी तरह का, definitely then the salesperson has to be in coordination with them. Supposing there is a new product launch, Tanishq as a company वो एक नया product launch कर रहे हैं during the Dhanteras, during the Diwali season, right? So उन्होंने एक advertisement launch किया, but they are not coordinating with the sales कि हमारा कुछ ऐसा advertisement launch है. So what will happen? अगर एडवर्टाइजमेंट लॉन्च है तो डेफिनेटली कंज्यूमर्स अवेयर होंगे, द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट वुड इंक्रीज, राइट? अब उनके स्टोर पे, हमारे स्टोर पे, तनिष्क के स्टोर पे देयर वुड बी अ ग्रेट इंक्रीज इन द फुटफॉल. ठीक है, तो उस फुटफॉल को मैनेज करने के लिए कैसे कैसे हम उसको डील करेंगे, हाउ डू वी train my salesperson, how do we delegate the responsibility to the salesperson, that has to be very clear from both the sides. Similarly हमने बात की कि हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके साथ भी एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सेल्स टीम का. Why is it so? Why is it so? अगेन अगर मैं तनिष्क का ही एग्जांपल लेते हुए बात करूं, तनिष्क ने ऐड दिया कि वी आर गिविंग यू सर्टेन डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट ऑन द jewelry during the Dhanteras or during the Diwali session. But if the production team is not aware of it, what will happen? उस तरह का प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब एडवर्टाइजमेंट आया डेफिनेटली देयर वुड बी एन इंक्रीज इन द सेल्स. सो if it is not well communicated to the production department, they will not produce those amounts. And similarly, the sales department also has to be in a constant collaboration with all the departments, so as to be on the toes, because they are the people who are representing the organization to the customer. So they are the person who are doing the speaking for your company, who are doing the speaking for your product, for your service. So they have to be very up to date, they have to be very knowledgeable with all sets of product knowledge, information with the products, right? अभी तक कोई डाउट किसी को? Again, what is personal selling? Personal selling, it involves oral conversation between the salesperson and the customers. These conversations can be either telephonically or it can be a face-to-face conversation with the set of consumers. Now, contribution क्या रहती है? Again, जैसे हमने discuss किया था, since the sales personnel or the person who is doing the sales, who is doing the talking to the consumer, because that person is in direct contact with the consumer. So first and foremost, definitely it will help me to generate the revenue. It will provide market research and customer feedback. So can anyone tell me, how will a salesperson be an important source of providing the customer feedback and the market
consumer feedback and the market research. How many of you believe कि जो हमारी Salesforce team है वो हेल्प करेगी मार्केट रिसर्च में और कंज्यूमर फीडबैक को जानने में? Do you justify this statement? सी, जब हम बात करते हैं पर्सनल सेलिंग की, हम कहते हैं जो हमारा पर्सनल सेलर है दैट पर्सन इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, राइट? सो ऐसा नहीं है कि वो कम्युनिकेशन वन वे है, इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन. The personal seller, he is telling about the product, about the service of the organization to the customer, but at the same time वो customer भी चुप नहीं है, he is also reverting back with a certain opinion of that product or that service. अगर हम भी किसी, if I go to any of the shop, so क्या होता है वहाँ पे? If I go to any of the shops, I see a product, and if I don't like it as a consumer, I would say that probably your product does not have those features which a competitor might have, or probably I would say कि ये बहुत महंगा है या बहुत इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मैंने इसको पिछली बार लिया था, और probably it is a very good product. So वो जो first hand reaction है customer का, जो first hand opinion है, that a personal seller could also get. So a personal seller, apart from generating revenue, he is also a source. He can also be a source because he is a person who is contacting directly with the customer, right? So वो आपको बता सकता है कि एक सेंटिमेंट क्या फ्लो कर रहा है बिटवीन द कस्टमर्स हु आर डायरेक्टली विजिटिंग देम. ठीक है? और सेकेंडली अगर हम बात करें, एक रिसर्च भी हुई है. पहले क्या होता था, जो भी सेल्स वाला पार्ट होता था, we used to say that sales is more about talking, it is more about telling about your product or your service to the customer. But अगर हम आज के टाइम में बात करें, हम कहते हैं कि sales is more about listening. Because listening, क्योंकि हम कंज्यूमर को लिसन करके भी एज अ सेल पर्सन आई कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट असेट टू द ऑर्गेनाइजेशन कि कस्टमर क्या चाह रहा है. आजकल अगर हम मिलेनियल मार्केटिंग की बात करें, कस्टमर इज द किंग because we have a lot of competition and we are just left behind if we do not understand the customer. हमने कस्टमर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को टेलर नहीं किया, अपने प्रोडक्ट को नहीं बनाया, प्राइसिंग को नहीं किया. सो इट इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एंड वी हैव टू हैव दैट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज once we know कि what the customer is wanting. तो एक सेल्स पर्सन का जॉब टॉकिंग से ज्यादा भी लिसनिंग का भी हो गया है. सो this was about the second point. Again, sales people, they provide solutions to the problem. बहुत बार हमने encounter किया है, हम किसी भी store पे जाते हैं, हम किसी भी shop पे जाते हैं कोई product लेने के लिए, we go with a set of problems कि I need washing machine probably, मेरे इस तरह की मेरे को चाहिए, प्राइसिंग में चाहिए, ये फीचर्स होने चाहिए, या मेरे पास को फोन चाहिए विद सर्टेन फीचर्स. सो अ सेल्स पर्सन कुड solve your problem, giving you the right set, right model of the product within your price range that you have been wanting. So they also help as someone who provides solutions to the problem. Also, salespeople, they provide expertise and serve as information resources. Also, salespersons serve as advocates for the customers when dealing with the selling organization. So ये सारे major roles होते हैं हमारे personal sellers के, हमारे sales person के. Then what are the sales channels? If I talk broadly about the sales channels, one is the field selling, wherein the salesperson, he's in the field, probably he might visit door to door, abhi jo ki kam ho gaya hai bahut zyada, he is indirectly in the retail shop. Then we have telemarketing, then we have inside selling,
फोन पे, मेल पे, ई कॉमर्स पे हम डायरेक्टली प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। नाउ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, so we can say that sales is an art and a science. It is both, because a salesperson should know the art of selling, and every person would have a different art of convincing and negotiating with the people. On the other hand, हम ये भी कहते हैं ये एक साइंस है, बिकॉज इसके साथ भी कुछ कुछ थ्योरीज, कुछ कुछ प्रैक्टिकलिटीज इन्वॉल्व हैं जो कि हम इसको यूज कर सकते हैं. So again, we talk about the ideas model of selling, which is attention, interest, desire, action and satisfaction. So हम सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले एक सेल्स पर्सन का, या जब हमें पर्सनल सेलिंग की बात करनी है, हमारे को कस्टमर्स का अटेंशन चाहिए ऑन द प्रोडक्ट और द सर्विस विच आई एम सेलिंग, राइट. उसके बाद एक अटेंशन मिलेगा. अगर हम उनको यही नहीं पता होगा कि मेरा प्रोडक्ट और सर्विस किस चीज के बारे में है, तो मैं कभी भी उस पर्टिकुलर कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के पास नहीं ला सकती. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई नीड टू ग्रैब दैट अटेंशन ऑफ द कंज्यूमर्स टुवर्ड्स माय प्रोडक्ट और सर्विस. सेकेंडली, आई हैव टू अराउज द इंटरेस्ट. प्रोडक्ट के बारे में पता तो चल गया, बट the consumer needs to have a certain level of interest in my product. Then he has to have the desire to buy that product. Then action, he will buy the product, and once the product is bought by the customer, my role as a salesperson would not stop there. I would also ensure key satisfaction to the customers, and more than satisfaction, today we talk of customer delight. Ki customer, even after buying the product, he is satisfied. If there is a problem that he is encountered, there is a support sales team who is going to support him throughout the process. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? Any doubt anyone has till now? No, let's all okay. All okay? Yes, ma'am. यहाँ तक सबको समझ आ गया? स्पीड वगैरह सब कुछ समझ है? लैंग्वेज तो नहीं है कोई? No, ma'am, no issue. चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं बताना चाहूंगी. जैसे अभी हमने बात की आइडाज मॉडल में सेटिस्फैक्शन के बारे में. हमने बोला कि एक बार मेरा प्रोडक्ट सेल भी हो गया, उसके बाद भी आई नीड टू इंश्योर एज अ सेल्स टीम, एज अ सपोर्ट सेल्स टीम, कि मेरा प्रोडक्ट जो मेरा कंज्यूमर है उसका पास प्रोडक्ट जाए और वो सेटिस्फाइड भी रहे. तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि आजकल हम बहुत इंपॉर्टेंटली बात करते हैं, रिलेशनशिप सेलिंग और रिलेशनशिप मार्केटिंग का. We have already discussed this in class, but एक बार recapitulate मैं करा रही हूँ since we are doing a revision class. दो तरह की सेल्स होती हैं, एक होती है ट्रांजैक्शनल सेलिंग, एक होती है रिलेशनशिप सेलिंग. ठीक. सो ट्रांजैक्शनल सेलिंग इट इज बहुत ही लिमिटेड काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स में आजकल रह गई है, नॉट into a very detailed kind of product if I talk about. So transactional selling is something which is एक बार एक बंदा मेरे पास आया, मैंने अपना प्रोडक्ट इसको बेच दिया. इट इज लाइक अ वन टाइम सेल. तो बेसिकली जैसे हमारे FMCG प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको कुछ ईटेल लेना है, आप गए कस्टमर के पास, you probably go with a preconceived set कि if I want to buy a flour, if I want to buy a bread or probably something, a biscuit or probably anything. एक बार मैं गई तो उसमें बहुत ज्यादा परसुएशन, नेगोशिएशन की जरूरत नहीं होती और हमने सेल कर लिया. बट आजकल हम बात करते हैं रिलेशनशिप सेलिंग की. रिलेशनशिप सेलिंग की इफ आई टॉक अबाउट रिलेशनशिप सेलिंग इन टुडेज टर्म, इट इज अबाउट बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद अ सेट ऑफ कंज्यूमर्स. तो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस में टुडे, अगर आप देखोगे बैंकिंग इंडस्ट्री में, इवन इन brands, jewelry brands, and if I talk about luxury brands, एक रिलेशनशिप मैनेजर आपको असाइन होता है. बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा होता है. अमेरिकन एक्सप्रेस में आप HNI क्लाइंट हो और इफ यू हैव लिमिट ऑफ अकाउंट होल्डिंग बिलो अबव अ सर्टेन लेवल, सो
a relationship manager or relationship seller would be involved with a certain set of customers. ठीक है, तो उनके साथ ही वो इंटरैक्ट करते हैं, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर वांटिंग, उनके साथ ही इंगेज करते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं. एंड इवन आफ्टर द प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड, वो उनसे रेगुलर फॉलो अप करते हैं कि आर यू हैप्पी, लाइक इफ यू बाय अ कार, so even after you have bought a car they would call you at regular intervals just to ensure कि आपकी कार ठीक से चल रही है नहीं चल रही, is there any problem, अगर कोई कंपनी की तरफ से और कोई स्कीम्स हैं और कोई ऑफर्स हैं, तो there is a relationship which every company is now trying to maintain with the customer. Because अभी जो हम बात करते हैं, we are not just talking about customer acquisition, we are also talking about customer retention. एक बार मैंने customer acquire कर लिया, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ लंबे समय तक रिटेन्ड भी रहे. और वो रिटेन्ड कैसे रहेगा? इफ आई have a proper relationship with my customers, I am treating them well, I am involved, concerned about their problems, their experiences and everything, right? So this is about the transactional and the relationship marketing. ये कुछ theories of management है. Right set of circumstances which is theory of selling, इसको हम बोलते हैं situation response theory, कि according to the situation the seller would respond, give a solution to the customer and sell the product. दूसरी होती है आपकी buying formula which is theory of selling. You need to, जैसे हमने बात की थी कि personal sellers क्या होते हैं, they are also the people who would help you give solutions. तो वो जो हम उसकी जो personal seller होता है वो identify करता है कि क्या need है, उसके लिए solution देता है और help करता है purchase में. Purchase के बाद purchase हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और purchase के बाद satisfaction हो सकती है और dissatisfaction हो सकती है. So in both the cases it is again the responsibility of the personal seller to understand and to engage with the customers to know about and tell them about the product. The next theory is behavioral equation theory, which say that response or internal response tendency, which is known as your act of purchasing a brand or patronizing a supplier. It is related to predisposition or the inward response tendency, that is the force or the habit, the present desire level, what is the amount of motivation that the customer has, what is the potential for him to buy that product, and what is the intensity of the cues. Cues क्या होते हैं इस केस में, कि आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिल रही है प्रोडक्ट के बारे में, क्या इंटेंसिटी से, एडवर्टाइजिंग किस तरह से हुई है, आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिली प्रोडक्ट के बारे में, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. तो हम कहते हैं कि हमारी जो बाइंग कैपेसिटी है एक कस्टमर की, कि वो प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं खरीदेगा, ये इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. सो फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको मेजरली ये थ्योरीज पता होनी चाहिए, बट अभी आपके सिलेबस में नॉट very important from examination point of view. So I was just giving an overview of these theories, क्योंकि कहीं ना कहीं personal selling इन चीजों से related होती है. यहाँ तक clear है सबको? Any doubt anyone has? No problem है. Okay. ठीक है. देखो, अब जब हम पर्सनल सेलिंग प्रोसेस की बात करते हैं, सो सिंस इफ आई एम द मैनेजर, आई एम द सेल्स मैनेजर, आई एम लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले क्या क्या स्टेप्स है पर्सनल सेलिंग प्रोसेस में वो मेरे को पता होने चाहिए, और आई शुड ऑल्सो नो द मिस्टेक्स दैट आर देयर इन द पर्सनल सेलिंग. मिस्टेक्स हमें क्यों पता चलनी चाहिए? सो दैट आई कैन रिमूव एंड reduce those mistakes, right? So what are the
स्टेप्स, सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, प्री अप्रोच, प्रेजेंटेशन, नेगोशिएशन एंड हैंडलिंग, क्लोजिंग द सेल्स एंड फॉलो अप। और उस सबके साथ में हमारे को कॉम्पेंसेशन का भी ध्यान रखना होता है किसी भी एम्प्लॉय का। तो जो प्रोसेस है पर्सनल सेलिंग का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये हम आगे आने वाली स्लाइड्स में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। यू शुड नो द वेरियस स्टेप्स, हमने क्लास में भी उसको बहुत डिटेल में किया था। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट from examination point of view. Again, how do we compensate the salesperson? Kyunki at times the sales job, the compensation part is slightly different from other kinds of job and motivating my salesperson. क्योंकि क्या होता है, कई बार जब हम सेल्स करते रहते हैं हमें बहुत tangible results नहीं मिलते, conversions नहीं होते, मेरे पास potential clients आ जाते हैं, lead prospecting हो जाती है, but बहुत टाइम हमारे पास लोग नहीं होते जो कि कन्वर्ट हो जाए और टैंजिबल रिजल्ट नहीं मिलता। सो द सेल्स पर्सन बहुत बार डीमोटिवेटेड हो जाता है। तो कॉम्पेंसेटिंग देम प्रॉपरली एंड मोटिवेटिंग देम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। तो कॉम्पेंसेशन में हम स्ट्रेट वेजेस दे सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं। सो देयर इज अ बेस पे व्हिच अ सेल्स पर्सन वुड गेट। फिर हर एक सेल पे कमीशन बेस भी हो सकता है। एक तो बेस सैलरी मेरे को मिलेगी, प्लस ऑन एवरी सेल आई कुड गेट अ कमीशन। दिस कुड बी वन मॉडल। नेक्स्ट कुड बी वेजेस और सम बोनस ऑन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सेल विच आई एम डूइंग। फिर होता है वेजेस और सैलरी प्लस द कमीशन। तो इन चार तरह से जो सेल्स फोर्स है, जो हमारे पर्सनल सेलर्स हैं, उनका हम कॉम्पेंसेशन करते हैं। कॉम्पेंसेशन अगेन इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द मिस्टेक्स विच एज अ सेल्स फोर्स, एज अ सेल्स पर्सन और एज अ सेल्स मैनेजर मैं कमिट कर सकती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है कि मेरे को सेल्स ही नहीं समझ आ रही, मेरे को बेसिक सेल्स क्या है वो ही नहीं समझ आ रही, सेलिंग क्या है, मेरे को अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम नोइंग माय प्रोडक्ट आल्सो आई शुड नो अबाउट माय यूएसपीज, माय पोजीशनिंग, माय प्राइसिंग। सो एज अ सेल्स पर्सन मेरे को बहुत प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, सब कुछ के बारे में। क्योंकि हमारे सामने कौन खड़ा है, कंज्यूमर खड़ा है। कंज्यूमर हैज द राइट टू ask any question regarding my product, and I should also know what is the competitive advantage, what is my USP which my competitors are not having. So वो सब चीजें हमारे को as a sales person बहुत strongly पता होनी चाहिए, और अगर हमें वही नहीं पता होगा तो हम we cannot be a successful sales person. And at the very basic हमें अगर selling का concept ही नहीं पता, so I would not be a very successful sales person. कई बार as a sales person I think I do not make that effort if I am not getting the right amount of sales, और हमें लगता है कि करते रहो चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। So that is also not a right thing. Then talking too much and not listening enough, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था कि एक लेटेस्ट रिसर्च आई है, उसमें ये बोला है कि हमारे को कंज्यूमर को लिसन भी करना होगा। क्योंकि ये भी हमने बात की कि हमारा जो सेल्स पर्सन है, ही इज अ सोल्यूशन प्रोवाइडर ऑल्सो। सो एज अ कंज्यूमर, एज अ सेल्स पर्सन आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे कंज्यूमर की नीड क्या है, क्या उनकी प्रॉब्लम है, तभी मैं उसको एक प्रोडक्ट के साथ, एक सोल्यूशन के साथ पिच कर सकती हूँ। अगर मैं उनको सुनूंगी ही नहीं और सिर्फ अपना अपना बोलती रहूंगी, तो आई वुड नॉट बी अ सक्सेसफुल सेल्स पर्सन। आई शुड यूज प्रॉपर टर्म्स इन माय सेल्स। अगेन हमारे को एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता कि हमें सेल्स मैं बहुत ज्यादा सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में बताए जा रही हूँ एंड आई डोंट नो वेयर टू स्टॉप माय सेल। और अदर केसेस कि मेरे को ये नहीं पता कि कैसे बंद करनी है अपनी सेल्स को। lack of sincerity, not paying attention to the details, again not keeping in touch with the markets about the latest development. तो ये कुछ issues रहते हैं सेल्स पर्सन्स के साथ which
would lead into the faulty sales. Okay. Any doubt till now? Anyone? Any doubt, anyone? No, ma'am. So let us move on to the next slide. The next slide is basically talking about the tasks which are involved in your sales management. What are the tasks that are there when we talk of the sales management? ठीक है? So again, सबसे पहले as a salesperson, I should know कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फर्म के सेलिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, या तो हम उसको खुद डिटरमिन करें या दैट वुड कम इन द हायरार्की, द टॉप मैनेजमेंट वुड डिसाइड, दैट वुड गो टू द मार्केटिंग टीम एंड दैट वुड डेफिनेटली बी ट्रांसफर्ड ऑन टू योर सेल्स टीम. हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए और उन ऑब्जेक्टिव्स को मेरे को अचीव कैसे करना है वो हमें पता होना चाहिए. फिर उसके अराउंड आई नीड टू फॉर्मुलेट माई सेल्स पॉलिसीज. Then I have to structure my sales force to achieve those sales policies. फिर sales territories हमें define करनी होती हैं. What is a sales territory? What is a sales territory? Sales territory is nothing but the area. क्योंकि अगर मेरे को आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो हमने बात मार्केटिंग में, जब हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग पढ़े थे तो हमने बात की थी सेगमेंटेशन की, कि क्या हमारा सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन होता है, क्या हमारी ज्योग्राफी होती है. एंड आई कैन नॉट टेल अ सिंगल सेल्स पर्सन और अ सेल्स टीम टू सेल द प्रोडक्ट थ्रू आउट इंडिया. तो हमारे को हर एक सेल्स पर्सन के लिए एक इंडिविजुअल सेल्स टेरिटरी भी आइडेंटिफाई करनी है. यस, यू वुड बी सेलिंग इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द पीतमपुरा, you would be selling in the south part, or probably you would be managing this particular area, you would be managing this particular territory. Also, I need to develop the sale forecast and the sale budgets, and I need to fix up the sales quota. What are the target for individual sales, what are the target for individual territories and the sales. So ये broadly बहुत important काम होता है जो कि एक सेल्स टीम को करना होता है. इफ हम ऐसे स्लाइड पे देख रहे हैं तो हमें बस पॉइंटर्स दिख रहे हैं, बट इट इज अ ह्यूज humongous task in itself, and it requires a lot of precision to know, because what is a sales team doing? They are directly, and they are the profit center for your organization. They are directly helping in selling the product to the organization. ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत स्ट्रांगली वी शुड अंडरस्टैंड. सेकेंड इज हमारे को सेल्स फोर्स का रिक्रूटमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स फोर्स, हाउ डू वी डू, हाउ डू वी सिलेक्ट, हाउ डू वी रिक्रूट, हाउ डू वी ओरिएंट देम, this is also very important. If I am not recruiting the right set of individuals for my organization, definitely my organization is not going to be a successful organization, which I'm talking about. Recruitment, selection, selecting the right sales force is also important from your examination point of view. Managing the sales force, again very important from your examination point of view. हम उनको compensate कैसे करते हैं, जैसे हमने discuss किया था 3 modes of compensation. How are we motivating them? How do I build their morale? Because at times the salesperson would feel completely demotivated. तो हम उनको मोरल बिल्डिंग कैसे करते हैं, उनकी सेल्स, उनकी कोचिंग, उनकी सुपरविजन कैसे करेंगे, इवैल्यूएशन पर अप्रेजल, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, managing the channels, ensuring the growth and the development of the new accounts. Because as a salesperson, मेरा काम सिर्फ existing accounts को, existing clients को maintain करना नहीं होता. I need to develop newer accounts and retain the existing ones. So हमारा वो भी काम रहता है. अपने कोऑर्डिनेशन करनी है हमारे को सेल्स कंट्रोल का, सेल्स एक्सपेंसेस का, एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना है. Also, as I said, as a salesperson, I should
know the complete aspects of my product in terms of the product, the pricing, the distribution, advertisement, and sales promotion. And since it is not last but the least thing, since I am the person who is responsible, who is talking to the consumer, I am the face of the organization, I have to create the right image for the company and its products in the market. ठीक है, तो ये सारे रोल्स होते हैं सेल्स को मैनेज करने के लिए, सेल्स मैनेजमेंट के इन डिटेल. एनी डाउट एनीवन हैज टिल नाउ? Any doubt? You want me to repeat anything? No, ma'am. So now let us just break for 5 minutes. You also just recapitulate. कुछ भी discussion होगा, कुछ भी point होगा, we can discuss, or else in the after 5 minutes we'll start the class again. Okay.
अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई क्या? अभी मैम ब्रेक पे। So I think we are done with the 5-minute break. Any doubt anyone has? I just told you to recapitulate whatever we have discussed. किसी को कोई डाउट है अब तक? No ma'am, no problem. ठीक है, तो हमने 5 minutes ago we just talked about the tasks which are involved in sales management. फिर हमने बात की थी managing the sales force, what are the important factors, what are the important features which I should take up when I'm doing a sales management. Now, when I talk about personal selling or the sales force management, I initially talked about कि हमारे को we should know the objectives for which the sales force is working, for which the sales force is striving. तो कौन से areas हैं जहाँ के लिए हमारे को personal objectives set करने चाहिए. First and foremost, क्या मेरे को sales volume achieve करनी है, and what is the sales growth which I intend to achieve. What is the share of each product in the total volume. So अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम एक कभी भी कोई एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन या कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं बेचते. देयर इज ऑलवेज अ प्रोडक्ट मिक्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग और कंट्रोलिंग. सो आई शुड नो कि हर एक प्रोडक्ट का क्या शेयर रहेगा टू अचीव द टोटल सेल्स वॉल्यूम, एंड that kind of judgment, that kind of segregation has to be done by the sales team. I need to set objectives for what are the existing market shares and what are the shares which I intend to achieve, what are the profits, what are the selling expenses. हमारे key accounts कौन से हैं जो कि already हैं, what are the big accounts that I have as an organization, what are the new accounts that I need to add. क्या क्या हमारे एडिशन है of the new dealers in the expansion of the channels, what is the proportion of cash and credit sales, how do I collect the sale proceeds, what is the process of collecting the sale proceeds, what is the amount that is due, what is the pre-sale and the after sale service, how do I do the training of the dealers and the customers, how do I provide assistance in sales promotional measures, and how do I supply marketing intelligence to the people. So these are the major areas jiske around as a sales manager, as a sales team, I should set the objectives. ठीक है? Any point that you want me to discuss in detail जो समझ ना आया हो in the previous slide? Okay, I hope this is clear. Now moving on to the next slide. Areas where the sales policies have to be set. क्या वो broader areas हैं जिसके around I need to create a strong sales policy so that I am a successful sales team. सबसे पहला होता है I've been constantly talking about the product. So again, I should understand and appraise my particular product line, the product which I am going to sell on a regular basis. And since हमने बात की थी, initially हमने बात की थी कि जो सेल्स पर्सन है, जो पर्सनल सेलर है, उसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है in getting feedback, in conducting a sort of market research from the organization. So वो जो हमारे को फीडबैक मिल रहा है, जो मेजर रिसर्च पॉइंट्स हमने उठाए अबाउट माय प्रोडक्ट, आई शुड अंडरस्टैंड दोस एंड आई शुड apply those things and do the proper improvements and rationalization of the products. I should again think of products. हो सकता है कि मेरी प्रोडक्ट लाइन में कुछ प्रोडक्ट गैप्स हों, उन प्रोडक्ट गैप्स को हमारे को फिल करना है बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव understood from the market,
probably there is a certain product gap in my product line जो कि मेरा competitor provide कर रहा है और मैं नहीं कर रही. So I have to fill those gaps. Again, कहीं बार कुछ प्रोडक्ट लाइन में ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी सेल ज्यादा नहीं हो रही होती. So as a sales team, I am the best person to know that. So I should be able to identify those products जो कि मेरी प्रोडक्ट लाइन से ड्रॉप होनी चाहिए. कोई नए प्रोडक्ट्स, कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट्स हमें ऐड करने चाहिए so that my sales is increased. Again, I should know whether product design or product quality needs to be changed. क्या क्या मॉडल्स, क्या क्या साइजेस, क्या प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, मेरी प्रोडक्ट डेप्थ किस तरह से है, कौन सी पैकिंग है जो कि बेस्ट सेल हो रही है, फिर हम सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड किस तरह की प्रोडक्ट गारंटीज वी शुड बी गिविंग. सो ऑल दीज थिंग्स एज अ मार्केटर आई शुड नो. ठीक है, ये हुई हमारे प्रोडक्ट के बारे में. फिर डिस्ट्रीब्यूशन. सो बेसिकली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो भी 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, उन 4 P's ऑफ मार्केटिंग पे एक सेल्स मैनेजर ही शुड हैव अ इन डेप्थ नॉलेज. इट इज नॉट जस्ट फॉर द मार्केटिंग टीम टू नो अबाउट द 4 P's. द सेल्स पर्सन शुड ऑल्सो नो अबाउट द 4 P's that we always talk about. They should have इन डेप्थ नॉलेज, क्योंकि उसी के अराउंड वो अपनी सेल्स पॉलिसी को डेवलप करेंगे, उसी के अराउंड वो अपनी सेल्स पॉलिसीज को बनाएंगे. अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो चैनल डिजाइन क्या है, चैनल टाइप क्या है, आर वी सेलिंग द प्रोडक्ट ऑनलाइन, आर वी सेलिंग इट ऑफलाइन, इज इट अ 1 level channel of distribution, it is a 2 level channel of distribution, or is it a 3 level channel of distribution. I should understand them. Whether or not I am going for a omni channel distribution. Omni channel distribution क्या होती है? What is a omni channel distribution? Omni channel distribution होती है कि in today's time a marketer, a company is not just selling through one channel. ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ ऑफलाइन बेच रही है या सिर्फ ऑनलाइन बेच रही है. कंपनीज होती हैं बट मेजरली मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर मूविंग इनटू ऑमनी चैनल. वो कहते हैं कि हम ऑफलाइन भी बेचेंगे, रिटेल आउटलेट्स के थ्रू भी बेचेंगे, अपने खुद के स्टोर पे भी बेचेंगे, ऑनलाइन भी बेचेंगे, ऑफलाइन भी बेचेंगे. सो दिस इज एन ऑमनी चैनल. सो एज अ सेल्स पर्सन मेरे को ये सब भी पता होना चाहिए कि हमारा चैनल का टाइप क्या है, चैनल का डिजाइन क्या है, किस चैनल से हम कितनी सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एंड फॉर डिफरेंट चैनल, ऑनलाइन के लिए आई विल हैव अ सेपरेट टीम, ऑफलाइन के लिए आई विल हैव अ सेपरेट टीम, रिटेल के लिए आई विल हैव अ सेपरेट टीम. फिर उस चैनल में हमारे चैनल पार्टनर्स की मोटिवेशन, उनकी ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. उनकी हम रेम्यूनरेशन कैसे डिजाइन करते हैं, चैनल पार्टनर्स के साथ हमारी रिलेशंस कैसे हैं, बिकॉज दे हैव टू बी अ वेरी positive cohesive relations with the company, with the sales person and my channel partners. चैनल की क्या क्या एसोसिएटेड कॉस्ट होती है वो सब भी एज अ सेल्स टीम आई नीड टू स्ट्रेटेजाइज ऑन ऑल दीज थिंग्स एंड आई हैव टू हैव द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट. फिर हमारा जो नेक्स्ट भी प्राइसिंग. अगेन हमारा प्राइसिंग क्या है, सिंस आई एम देयर इन द फील्ड, आई एम देयर इन द मार्केट, आई शुड बी नोइंग कि कंपटीशन से मैच हो रहा है प्राइस या नहीं हो रहा, कम है कि ज्यादा है, बहुत कम है कंपटीशन से ज्यादा है. सो आई कैन मैच, also work on matching the pricing. What are the promotions that are there, what could be the specific rebates or discounts that could be there, what is the delivery a team, what are the dispatch and terms of payment, what is the pricing method that is to be followed for each class of customer or order. So I should have knowledge of all these things and I should be policizing on all of these things. Okay, any doubt till now, anyone? यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट? Okay, moving ahead, we will be talking about how do I structure. अगर मेरे को अब सेल्स फोर्स बनानी है, उनकी स्ट्रक्चरिंग how do I do,
How do I decide the sales force? How do I decide the sales territory? What is the idea or criteria for territory design? Territory size क्या है? Territory shape क्या है? Two common methods जो कि हम designing के लिए use करते हैं, that is an equal workload method and an equal potential method. Then I should be able to review my territory design. I should be able to assign right territory to the right salesperson, and I should, as a sales team, as a sales team, it is very important for me to maintain the database for each and every territory. मेरे को ये पता होना चाहिए कि कौन सी territory है, territory assignment हमने कैसे किया, कौन सी territories में कौन से लोग काम कर रहे हैं, और हर चीज का I should have a database. It should not just be a random thing that is there. Okay. Again, territory design, it is again important from your organizational examination point of view. Now, what is the sales quota? How do I fix the sales quota? And sales target. How do I fix the sales quota and the sales target? So a participative approach, अगर हम अपनी sales quota और sales targets को कर रहे हैं, तो there has to be a participative approach which should be made, which is desirable. So again, एक्टिविटी के बेसिस पे हम कर सकते हैं कि कितनी हमें सेल्स कॉल करनी है, कितने नंबर ऑफ डीलर्स को कॉन्टैक्ट करना है, what are the number of displays and demonstrations I have to take up, what are the new accounts that I need to add, what are the dealers, what are the cost and profit targets. Again, I should work on creating and recruiting the right set of people. Also, I should be able to manage. एक बार मैंने recruit तो कर लिया, but उनको manage करना बहुत important होता है. So compensation की मैंने पहले भी बात की थी. A good compensation plan has to be in hand. So what are the characteristics of a good compensation plan? जो हमारा compensation होना चाहिए, वो salesman की activities को, उसकी जो compensation है, they should be directed towards the company's objectives. Again, correlated effort होना चाहिए कि जितना हमारा outcome है, results and rewards जो हैं, they should be correlated to the efforts of the salesperson. The sales manager, the sales force manager, they should help the salesmen to put in their best effort. They have to motivate them. Again, सेल्समैन की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनको एंथुजियास्ट करना, उनको एफिशिएंट सेल्समैनशिप के लिए, और जो इनएफिशिएंट हैं उनको फिर से ट्रेन करना, मोटिवेट करना, और अगर वो नहीं हो पा रहे उनको इनएफिशिएंट वंस को वी हैव टू आल्सो टेक अ कॉल एंड रिमूव दोस पीपल आफ्टर वी हैव इन्वेस्टेड अ टाइम ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग दोस पीपल. अगेन, जो हमारा प्रेफरेबल मोड ऑफ कॉम्पेंसेशन होता है, हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था, एक तो फिक्स्ड होता है, एक अश्योर्ड इनकम होती है, एंड देन वी कैन गिव सम कमीशन और सम बोनस और एन एडिशनल रिवार्ड फॉर देयर सुपीरियर परफॉर्मेंस. वी हैव टू बी फेयर एंड जस्ट टू द फर्म एंड टू द सेल्स पर्सन. सो वी हैव टू हैव अ मिडिल ग्राउंड. वी कैन नॉट जस्ट बी, अगर मैं सेल्स मैनेजर हूँ तो मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सेल्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले जा रही हूँ कि उसने इतना एफर्ट करा, हमें उसको देना है. एंड इट शुड नॉट बी दैट आई एम नॉट एट ऑल लिसनिंग टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द सेल्स पर्सन. आई हैव टू बी अ बैलेंस बिटवीन द सेल्स टीम एंड द company. Again, at the same time, I have to reflect the current needs of the firm. So probably जो हमने sales policy अभी तक हमने बात की, जो sales policy कल बनाई थी, last week बनाई थी, probably it might not be a very successful sales policy today. So I have to be very flexible. I have to be understanding the current needs. I have to be understanding of the competition. I have to have an eye on what are the changes that are taking place. उस तरह से हमें करना है. कॉम्पेंसेशन प्लान इकोनॉमिक और कॉम्पिटिटिव भी होना चाहिए, एंड इट शुड बी इजी एंड सिंपल टू एडमिनिस्टर. Okay, now what are the steps involved in directing a sales compensation management? First and foremost, हमारे को
जॉब को डिस्क्राइब करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन बनानी होती है, जॉब इवैल्यूएशन करनी होती है, ओवरऑल कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है फर्म का. अगेन आई हैव टू also keep in mind the industry comparisons, because if a salesperson is coming, he should be paid competitively. ऐसा नहीं है कि हम उसको बहुत कम या बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं as compared to my industry. So that competition has to be what is the competitor offering, that should also be taken care of. I should also take suggestions from the sales force or the managers who are there in the field. Then I decide the compensation level and I decide on the compensation mix. Next is the financial compensation we talk about. There has to be direct payment of money, salary, commission वगैरह हम इनसे देते हैं. Indirect payment क्या होता है आपका? Probably paid vacations, your medical care, company finance, insurance, stock options, etc. So all these things अगर हम ये देते रहते हैं तो compensation में again this was also help in motivating your employees. फिर नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन में अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट, वी कैन गिव देम प्रमोशंस, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटर डेलीगेशंस, बेटर डेजिग्नेशंस. अगेन आई शुड वर्क ऑन फुलफिलिंग देयर एस्टीम नीड्स. सो हमने मैस्लोस हायरार्की में पढ़ा था, इफ we are giving them power, we are giving them designation, we are giving them authority to work, so this is also a kind of motivation for the employees. Okay, अगेन जब हम उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हमारे को वेटेज देना है कि क्या क्या डिफरेंट एलिमेंट्स है जिसकी बेसिस पे हम उनको प्रमोट करेंगे, वो सब भी एज अ सेल्स टीम हमें आइडेंटिफाई करना होता है. अगेन जो भी हमारा कॉम्पनसेशन प्लान है हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको वॉच करना है, रिव्यू करना है, देन आई हैव टू इम्प्रूव. ओके, देन कॉम्पनसेशन मिक्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. देयर हैज टू बी अ स्ट्रेट सैलरी प्लान कि आपकी एक बेसिक फिक्स सैलरी कितनी है, स्ट्रेट कमीशन प्लान कि इतना कमीशन मिलेगा, सैलरी प्लस कॉम्बिनेशन प्लान, सैलरी प्लस ग्रुप कमीशन प्लान, commission plus approved expenses plan. So there are a lot of expenses which are there, so we have to take care of all those things. Next is travel compensation plan, because as a salesperson I will be moving to a lot of places, so I have to have that compensation for the travel that I am doing. So this also goes into my compensation plan. Any doubts anyone has till now? Any doubts? Any doubts anyone? No ma'am, no problem. ठीक है, आगे चले. अभी हम जो भी हमने ये मेथड्स पढ़े थे उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ते हैं. स्ट्रेट सैलरी एंड स्ट्रेट कमीशन प्लान्स, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स? इजी होता है, सिंपल होता है, डिजाइन टू एडमिनिस्टर, दीज आर मेरिट्स. एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है कंज्यूमर को कि हाँ आई वुड बी गेटिंग दिस फिक्स्ड अमाउंट एवरी टाइम, एंड इट इज ऑल्सो बेस ऑफ मोटिवेशन. अगर हम सिर्फ कमीशन बेस्ड रखेंगे तो मोटिवेशन नहीं होगा. अगेन एक फर्म कंट्रोल रहता है सेल्समैन के ऊपर. इट इंश्योर्स दैट सेलमैन सेल्स ऑल द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म एंड नॉट दोज प्रोडक्ट्स जिसके लिए उसको कमीशन मिल रही है. And so it helps in ensuring that salesmen attend to long-term marketing concerns of the firm. Again, अगर basic structure है एक salary का, तो unhealthy rivalry, jealousy among the salesperson is avoided. It is a good strategy when the organization has choosing a pull strategy for creating sales. Fresh salesmen हैं जो कि compensate होने चाहिए. It goes into the fresh territories, and we are selling some technical product which involves long negotiation and longer purchase cycles. Also, when someone is selling a new product, the fixed compensation होनी चाहिए because it would definitely require a longer cycle term. तो अगर हम सिर्फ उसको compensation और commission based रखेंगे तो my salesman would be demotivated. Then
अगर हम ऐसी मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं विच इज येट टू बी डेवलप्ड, अगेन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे सेल्स एफर्ट्स आप कर लो बट कई बार प्रोडक्ट सेल नहीं होता, सीजनैलिटी होती है प्रोडक्ट्स की, तो हमारे सेल्स एफर्ट और एक्चुअल सेल्स किसी कुछ सिचुएशंस में कोरिलेटेड नहीं होते, तो उन केसेस में हमारा स्ट्रेट कॉम्पेंसेशन प्लान बहुत अच्छा रहता है. अगेन इट डज नॉट ऑफर इंसेंटिव. मेरिट्स क्या होते हैं कि कई बार जो डीमेरिट्स क्या होते हैं, एट सम टाइम्स जो मेरे सेल्स पर्सन है उनको लगता है कि हम सेल करेंगे या नहीं करेंगे, हम इतने पैसे तो मिलेंगे, तो उनका वो मोटिवेशन जो इंसेंटिव होता है वो कई बार डिक्रीज हो जाता है. अगेन सैलरी एक फिक्स्ड कॉस्ट बन जाती है, इट इज अनरिलेटेड टू द सेल्स वॉल्यूम और मार्जिन. ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट सेल हो ही नहीं रहा बट यू हैव टू गिव दैट सैलरी, ठीक है. सो उन सब केसेस में थोड़े से ये डीमेरिट्स होते हैं. देन द स्ट्रेट कमीशन प्लान, मेरिट्स क्या है इसके? It is providing incentives to perform better as it rewards the salesmen according to their performance. Commission, it is a variable cost and it is related to the sales volume. So जितनी सेल्स होगी उतनी ही आपकी कमीशन बेस्ड सैलरी जाएगी, ठीक है. किन केसेस में ये यूजफुल होती है? When the firm has chosen a push strategy, high incentives is needed to get the sales. Not much of non-selling work such as setting up displays etc. ये सब इन्वॉल्व होता है, उस केसेस में हम इसको यूज करते हैं. कंपनी फाइनेंशियली वीक है तो बहुत ज्यादा सेल्स मार्जिन वगैरह नहीं है, तो जितना प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसके बेसिस पे हम एक कमीशन पे कर रहे हैं. और ऐसी मार्केट में हम मूव कर रहे हैं व्हेन विच इज हाईली कॉम्पिटिटिव एंड द सेल्स आर रिलेटेड टू द सेल्स एफर्ट. सो ऐसी मार्केट में कि जहाँ हमें लगता है कि हमने थोड़ा सा सेल्स एफर्ट किया तो हम मार्केट को अचीव कर लेंगे. ओके. डीमेरिट्स, अगेन इट इज डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड एडमिनिस्टर, क्योंकि कई बार इसकी मॉनिटरिंग, इसका डेटाबेस मेंटेन करना, फॉर्मुलेटिंग, जो फॉर्मूले होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. सो एट टाइम्स इट इज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर द फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द सेल्समैन. It is not much of use when the salesmen are absolutely new in the market. अगेन कंट्रोल बहुत डिफिकल्ट रहता है क्योंकि कई बार हमारे जो सेल्स पर्सन होते हैं वो फ्रीलांसर्स होते हैं, तो उनको कोई कमीशन नहीं देते, तो उस केस में डिफिकल्ट होता है. डिफिकल्ट सेल्स टेरिटरीज में सफर, कई बार ऐसी सेल्स टेरिटरी है जो कि जहाँ पे सेलिंग हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होती है ड्यू टू सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर्स. उन सब केसेस में इट इज अ चैलेंजिंग थिंग. और सिंस ये कमीशन बेस्ड स्ट्रैटेजी है, sometimes there is unhealthy competition, unhealthy rivalry, jealousy amongst the salesperson. At times, if the product is highly seasonal, the salesman की जो income है वो बहुत highly skewed हो जाएगी. कुछ month में बहुत ज़्यादा होगी, कुछ month में बहुत कम होगी. Off season and on season में there would be a quite lot of variations. Similarly, if the market is unduly depressed due to some reason, the income of the salesperson would suddenly go down. Again, कहीं बार होता है कि बहुत excessive position, क्योंकि salesman को लगता है कि whatever I am selling, so sometimes the salesperson might feel कि हमारे को तो हर सेल पे कुछ कमीशन मिल रहा है, कुछ पैसा मिल रहा है, तो वो बहुत excessive पुश करते हैं अपने प्रोडक्ट को, एंड दे आर नॉट एट दैट टाइम लुकिंग फॉर द कस्टमर वैल्यू और द सेटिस्फैक्शन. सो इन दैट केस एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है प्रोडक्ट का इन द मार्केट. ओके. नाउ सेल्स फोर्स मोटिवेशन मिक्स. हम मोटिवेट कैसे कर सकते हैं अपने सेल्स को, सेल्समैन को, सिंस हमने डिस्कस किया कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कई बार ये जॉब. सो हाउ डू आई मोटिवेट माई सेल्स पर्सन? सबसे पहले तो कॉम्पनसेशन प्लान, फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन हम उनको दे सकते हैं, हम उनको इंसेंटिव्स देंगे, कमीशंस देंगे. नॉन फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन जैसे हमने पहले डिस्कस किया, रिकग्निशन हम दे सकते हैं, उनको ट्रॉफीज दे सकते हैं, सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं. सो दे आर मोर मोटिवेटेड, इंट्रिंसिकली एक्सट्रिंसिकली दोनों तरह से हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं. प्रमोशंस दे सकते हैं, कोचिंग दे सकते हैं, सुपरविजन दे सकते हैं, उनको सेल्स कॉन्टेस्ट, सेल्स मीटिंग्स, कन्वेंशंस में भेज सकते हैं. सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ मोटिवेशन. वी कैन ऑल्सो
वर्क ऑन देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम. इंडक्शन तो तब होती है जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, और कंटिन्यूएशन हम उसका कर सकते हैं. सेल्स प्लानिंग एमिटेशन, हम उनकी फोरकास्टिंग इस सब में हेल्प कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, मैनेजमेंट को, लीडरशिप स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं. बहुत अथॉरिटेटिव नहीं होना चाहिए, और सेंसिबल मैनेजमेंट कर सकते हैं. सो मोटिवेटिंग द सेल्स, हाउ डू यू मोटिवेट योर सेल्स पीपल? दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, मोराल कैसे बिल्ड कर सकते हैं हम अपने एम्प्लॉयज का? सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ये सेल्स फोर्स मैनेजर का, हाउ डू आई बिल्ड द मोराल. तो मोराल बिल्ड करते हैं हम, बट सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि लो मोराल क्यों होता है हमारे सेल्स फोर्स मैनेजमेंट का. व्हाट इज द रीजन फॉर द लो मोराल ऑफ द सेल्स फोर्स? कैन एनीवन टेल मी? Can anyone tell me what is the reason for the low morale of Salesforce? So there are a variety of reasons. We cannot just attribute to one reason which is contributing to the poor morale of the salesperson. Sometimes जो हमें सेल्स टेरिटरी दी गई है, जो सेल्स पर्सन को सेल्स टेरिटरी दी है, वो बहुत प्रॉपरली डिजाइंड दी नहीं, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत प्रॉपरली डिजाइन नहीं है, उस पर बहुत एफर्ट नहीं किया गया. इन दैट केस सेल्स नहीं होती, सेल्स एफर्ट इज नॉट डायरेक्टली प्रोमोशनल टू द सेल्स. उस केस में मोटिवेशन डाउन हो जाती है. समटाइम्स सेल्स पर्सन को ऐसी टेरिटरी दी होती है जिसमें पोटेंशियल बहुत कम है. तो अगेन, क्योंकि पोटेंशियल कम है, मार्केट बहुत स्ट्रांग नहीं है, अगेन डीमोटिवेटेड फील करता है एम्प्लॉय, क्योंकि उसकी सेल्स नहीं हो रही. कॉम्पनसेशन प्लान मेरा फॉल्टी है, उस पर अच्छे से वर्क नहीं हुआ. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन फेयर नहीं है. Sometimes there are unfair treatments in rewards, transfers, and promotions. So these are majorly the reasons. And again, organization में कुछ regulations, restrictions हैं. So be it any of the reasons that we have discussed here, what will happen? Poor morale of the sales force, it would affect your sales performance, and it would also lead to poor customer service, poor channel relationship, poor public relationship of the firm, poor revenues for the firm. So it is so imperative, so important to maintain a proper motivated sales force for the organization. जब एक पुअर मोरल होता है तो ओवरऑल एक बड़ा ही नेगेटिव इन्वायरमेंट बन जाता है, जो माइनर कंप्लेंट से दे गेट मैग्नीफाइड, यूनियनिज्म हो जाता है, एंटी मैनेजमेंट एटीट्यूड हो जाता है. सो द ओवरऑल culture or the overall environment is not very good, and it is very difficult to thrive in such an environment. और अगर हमारी सेल्स फोर्स ही लो मोरल के साथ रहेगी, तो जो हमने डिस्कस किया था कि हमारे चैनल पार्टनर्स के थ्रू, हमारे प्रोडक्ट्स के थ्रू, ओवरऑल जो एक सेल्स का परसेप्शन है कंपनी के प्रोडक्ट का विद द कंज्यूमर्स, पुअर चीज हो जाएगी एट एवरी फ्रंट, एंड इट वुड बी नॉट अ वेरी गुड थिंग. ठीक है. Now, how do I build the morale? How do I build the motivation? Again, it is very important. Organization का climate क्या है, organization का environment क्या है? So for morale to be good, the organization environment has to be good. The firm should follow sound principles of management. Good sales force morale results when organization gives right treatment to the salesperson. The organization should give them proper authority and responsibility. फेयर प्ले होना चाहिए. सेल्स मैनेजमेंट एंड जो आपकी सेल्स टॉप मैनेजमेंट है, सेल्स मैनेजर, दे शुड बी हैव प्रॉपर treatment to the employees. They should not have a very authoritative treatment. Again, the management, they should have proper appreciation of the unique environment in which the salesperson are working. क्योंकि क्या होता है, सेल्स पर्सन while they are working on the field ना, वो लोनर्स होते हैं. They are working all by themselves. They do not have a physiological comfort of sitting in an office and learning. They are at times living away from their family. तो कहीं बार बहुत difficult भी होता है उनके लिए deal करना. So the company should support them strongly
and they should value him, and they have to, the salesperson should feel जो उनके sales manager हैं, they are dependable. So that kind of conducive environment needs to be created. Again, good communication, it promotes effective morale, effective communication होती है. In many firms, कई बार सेल्स पर्सन को पता ही नहीं होता कि उनकी मैनेजमेंट उनके लिए क्या क्या करना चाह रही है, क्या पॉलिसीज हैं. सो दैट कम्युनिकेशन हैज टू बी डन from the top management ki yes, these are the policies that are being developed for you, that are working for you. Okay. And morale building, it is like a continuous job. It is not a one time job ki ek baar maine morale build kar liya aur mera kaam ho gaya. So it should start right from my recruitment stage to the induction stage. It should be carefully built up, and as the salesmen grow in their job, morale building should continue. Proper revenues should be created. And again, if we ensure that there is a good morale, sales manager can convert a high potential salesman into a high performing salesman, and an average potential salesman into an above average performer. So this is how strongly the sales force, motivating the sales force, increasing their morale should work. Okay. यहाँ तक क्लियर है सबको? मोटिवेशन, मोरल कैसे इंक्रीज करते हैं, कॉम्पेंसेशन कैसे डिवाइस होती है, हर एक कॉम्पेंसेशन प्लान का मेथड क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं. Because all these topics, these are very important from your exam point of view as well, and from the practical point of view. If you are working as a salesperson or you are managing a sales team, all these things are very important. You should know about all these things. तो किसी को कोई डाउट है अभी तक? नाउ हमने कंटिन्यूअसली हम बात कर रहे हैं सेल्स ट्रेनिंग की. तो इफेक्टिव ट्रेनिंग डिजाइनिंग कैसे हम कर सकते हैं? फर्स्ट इज आई शुड नो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेनिंग. हमें खुद जब एज अ सेल्स पर्सन में ट्रेनिंग डिजाइन कर रही हूँ, आई शुड नो व्हाट आर द एम्स ऑफ द ट्रेनिंग. आई शुड डिटरमिन द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ द सेल्स फोर्स एज अ होल. आई शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि व्हाट आर द स्पेशल ट्रेनिंग नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल. एक तो एज अ ग्रुप क्या ट्रेनिंग नीड्स हैं जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, बट इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर मेरे को लगता है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन की प्रॉब्लम नेगोशिएशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, या सेलिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, या प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, आई शुड ऑल्सो वर्क ऑन दैट. फिर हमारे को नेचर ऑफ द ट्रेनिंग एंड टाइप ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो भी हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऑन द फील्ड ट्रेनिंग है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, इंडक्शन का मोड ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, हाइब्रिड है, टाइप्स किस टाइप के प्रोग्राम, क्या हम अपने क्या कहते हैं उसको, सेल्स ऑन द जॉब सेल्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, रोल प्लेस कर रहे हैं, क्या मेथड्स है मेरी ट्रेनिंग के. फिर हमारे को टीचिंग एड्स, ट्रेनिंग एड्स, मटेरियल्स डिजाइन करने पड़ेंगे, कुछ हमें मॉड्यूल्स देने हैं तो वो डिजाइन करने हैं. टाइमिंग ऑफ द ट्रेनिंग क्या है, किस वक्त ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस महीने में होनी चाहिए, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग. ऑल्सो when I implemented a strong training program for my employees, I have to understand the effectiveness of the training program. And it is not just my salesperson who need to be trained. I have to have the training for the trainers also. So that is another important aspect of my training. Again, an important topic from your examination point of view. अब जो मेरी ट्रेनिंग होती है, सेल्स ट्रेनिंग होती है, वो क्या क्या हेल्प करती है? अगेन डेफिनेटली अगर मेरे सेल्स पर्सन मोटिवेटेड होंगे, वो परफॉर्म बेटर कर रहे हैं, ट्रेन हो रहे हैं बेटर, दे वुड हेल्प इन इंक्रीजिंग द सेल्स, गेटिंग न्यू अकाउंट्स, फास्टर टर्न अराउंड ऑफ स्टॉक्स. सिंस अगर मेरी सेल्स बढ़ती रहेंगी तो टर्न अराउंड ऑफ स्टॉक्स फास्टर होगा, हम कंप्लीट प्रोडक्ट लाइन को बेच पाएंगे, बिकॉज आई हैव हैड द ट्रेनिंग ऑफ सेलिंग ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेलिंग वन प्रोडक्ट, मैं अपनी पूरी प्रोडक्ट लाइन को भी सेल कर सकती हूँ. द सेल्स प्रमोशन मर्चेंडाइजिंग बेटर हो सकती है. आई कैन हैव बेटर प्रोडक्ट नॉलेज और टेक्निकल एक्सपर्टीज. आई कैन इम्प्रूव द सेल्स प्रेजेंटेशन एंड शार्पन माई सेल्स स्किल्स.
I can work on customer education on the products, their use, their benefits, and at the same time, it can help in improving customer relations and dealers relations. Objectives and sales of personal selling, we have already done that. Types of sale training आपकी हो सकती है within the company. You can go somewhere out and do an external training. Individual training, we can find certain people who are having some individual incompetencies, उनको हम train कर सकते हैं. Group training कर सकते हैं. On the job training क्या होती है? आप job पे हो and while learning on the job, while doing your job, आप ट्रेन होते रहते हो. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मैंने आज एक सेल्स टीम ज्वाइन की, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स अबाउट द कंपनी, अबाउट द प्रोडक्ट 4 Ps पे ट्रेन किया और सीधा एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स पर्सन के साथ मेरे को मार्केट में भेज दिया. देन आई वुड बी अलाउड टू अंडरस्टैंड व्हाट ही और शी इज डूइंग एंड देन लर्न फ्रॉम दैट एंड इवेंचुअली फिर मैं सेल्स को पिच करूंगी. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज आउटसाइड द जॉब. ट्रेनिंग के कंटेंट्स क्या होने चाहिए मेरे? I should give knowledge about the company policies, about the product range, about the market, about the competition, about the salesmanship. Again, जब हम सेल्स की बात करते हैं, सेल्स को कंट्रोल करना, सेल्स को मैनेज करना. इट इज नॉट कि सेल्स हो गई, सेल्स हमने कर दी और हमारा रोल एज अ सेल्स मैनेजर खत्म हो जाता है. How do I control my sales? How do I control the budgeting? How do I effectively manage that? That is very important. तो हमारे को how do I do that? I can do that by setting the sales target and the sales report. हर एक टेरिटरी की, हर एक रीजन की क्या सेल्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए. सेल्स का एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर बजट रिपोर्ट्स क्या हैं. ट्रैवल प्लान्स एंड रिपोर्ट्स हैव टू बी प्रॉपर्ली कोलेटेड एंड मेंटेन्ड. I need to do a proper watching of the salesman. ऐसा नहीं है कि salesman field पे गया and he is doing wandering around and doing nothing. That has to be properly maintained by the sales manager. Again, क्या information मेरे को customer से मिली है, dealer से मिली है, consumer behavior जो हमने उनका study किया है वो क्या है. Inspection of the depots, warehouses, sales conferences, meetings monthly, उन सबका record होना चाहिए. ये सब चीजें हमारे को आइडेंटिफाई करनी रहती हैं. अगेन अगर हम बात करें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स एंड सेल्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, what it is, the importance of it, it should ensure physical flow of the products from the producer to the consumer. It confers place and time utility on products. It is helping build you a clientele, promising area for cost reduction, because value chain की अगर हम बात करते हैं तो हम cost drivers, value drivers को identify कर पाते हैं. It can help in the cost reduction. Now, what are the components function of physical distribution and marketing logistics? I can plan the overall distribution system. I can go in for in-plant warehousing, transportation, field warehousing, receiving. I need to work on handling secondary transportation, secondary handling, and all these things. So, physical distribution is not much a part of our syllabus. Physical distribution ये हमारे को अभी बहुत डिटेल में नहीं करना है. ठीक है. सो यहां तक किसी को कोई डाउट है? Anyone has any doubt till now? Please let me know. Any doubt, anyone? So we have talked about what is sales management, what is the role of sales management. Sales executive, sales management, they work as a coordinator. Why do they work as a coordinator? Personal selling का contribution क्या है, उनका role क्या है. 4 sales channels क्या हैं. फिर theories of personal selling की है हमने, IDA's theory of selling, right set of circumstances, buying formula and behavioral equation theory. ये हमने just for our own understanding किए, not very important from your examination point of view. फिर पर्सनल सेलिंग का प्रोसेस हमने ब्रीफ में किया था, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. अभी हम इसको डिटेल में करेंगे. कॉम्पेंसेशन,
important from exam type of view. Sales force का recruitment selection, important from exam point of view. This we are going to do in detail in the upcoming slides. फिर मैनेजिंग द सेल्स फोर्स, मोटिवेटिंग द सेल्स फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब हम डिटेल में कर चुके हैं. क्या क्या एरियाज होते हैं जिसपे पॉलिसीज को वर्क करना होता है, टेरिटरी साइज, टेरिटराइजेशन कैसे हम करते हैं, इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सेल्स कोटाज हम कैसे डिफाइन करते हैं, कॉम्पेंसेशन कैसे डिजाइन करते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स. फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन क्या होती है, हर एक कॉम्पेंसेशन प्लान के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, ठीक है. फिर हम मोराल बिल्डिंग कैसे करते हैं, पुअर मोराल का क्या होता है, मोटिवेशन कैसे कर सकते हैं, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉय सेल्स फोर्स, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी डू, ये सारा आपका उसमें आ जाता है. एंड दिस वाज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट व्हिच इज नॉट in your syllabus, so you should just have a basic knowledge of all these things. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, टेक 5 minutes. किसी को कोई डाउट है, कोई स्लाइड को रिपीट करना है तो प्लीज लेट मी नो. मैम प्लीज पीपीटी शेयर कर दीजिएगा. पीपीटी में शेयर कर दूंगी, बट आप अभी बता दीजिए कोई प्रॉब्लम है. नो मैम, नो इशू. ठीक है, तो अभी टिल 1 o'clock हम जो हमारे 2 टॉपिक्स रह गए, पर्सनल सेलिंग प्रोसेस एंड रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, उसको करते हैं एक स्लाइड के थ्रू. उसके बाद हम 1 hour का एक ब्रेक लेंगे. देन वी विल स्टार्ट एट 2. एट 2 हम क्या करेंगे, हम एसएलएम को गो थ्रू करेंगे, ठीक है. मेजरली चीजें सेम ही होंगी जो कि अभी डिस्कस की हैं, बट एक आधी चीजें कोई डिफरेंट होंगी तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. आपके कोई डाउट्स होंगे तो हम डिस्कस करेंगे. फिर हम कुछ हाउ डू वी अटेम्प्ट द केस स्टडीज, हाउ डू वी अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, वो डिस्कस करेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देन आपके डाउट शेयर करेंगे. सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी हम बचे हुए 2 टॉपिक्स करके देन विल ब्रेक एट 1. ओके, जस्ट गिव मी 2 minutes. आई पुट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड.
I hope the slides are visible to you now. यस मैम। ठीक है, तो अभी हम पर्सनल सेलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वी हैव टॉक्ड ऑफ पर्सनल सेलिंग क्या होती है, अभी बहुत 1-1.5 घंटे से वी हैव बीन टॉकिंग, बट उसको करते कैसे हैं, क्या प्रोसेस होता है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न। ऑल्दो वी हैव सेड दैट पर्सनल सेलिंग इज एन आर्ट एंड साइंस, बट उसको करने के भी एक मेजर तरीके होते हैं विच एज अ सेल्स पर्सन आई शुड नो। तो पर्सनल सेलिंग का गोल क्या होता है? द गोल ऑफ पर्सनल सेलिंग प्रोसेस इज टू गेट न्यू कस्टमर्स एंड ऑब्टेन ऑर्डर्स फॉर फ्रॉम देम। तो इसको करने से पहले यू शुड कीप इन माइंड, जब स्टेप्स आपको बता रही हूँ तो आपको एज अ कंज्यूमर सोचना है कि आपके साथ भी ये चीजें हुई हुई हैं, तो आपको उससे कोरिलेट भी करना है। सो सबसे पहला स्टेप होता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या करता है कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स कौन हैं वो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हम रेफरल्स ले सकते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से, कस्टमर्स के थ्रू, सप्लायर्स, डीलर्स, इंटरनेट। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारे कस्टमर्स कौन है। वी शुड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नो दैट, ओके। देन क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग होता है हमें गुड, मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट आ गई है, अब आई हैव टू आइडेंटिफाई कि उसमें से भी गुड कस्टमर्स कौन से हैं, एंड आई हैव टू स्क्रीन आउट द कस्टमर्स हु आर नॉट वेरी अट्रैक्टिव, हु आर नॉट फॉलोइंग इनटू माय सेगमेंट। वो हम कैसे करते हैं? फाइनेंशियल अबिलिटी कितनी है कस्टमर की। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेलिंग अ हाई एंड प्रोडक्ट, इफ आई एम सेलिंग अ लग्जरी प्रोडक्ट, सो आई हैव टू बी एबल टू आइडेंटिफाई कि वो लग्जरी प्रोडक्ट कितने लोग के पास वो फाइनेंशियल एबिलिटी है टू बाय दैट प्रोडक्ट। सो रेस्ट ऑफ द पीपल वुड बी स्क्रीन्ड आउट ऑफ माय सेगमेंटेशन क्राइटेरिया। वॉल्यूम ऑफ बिजनेस क्या है, नीड्स क्या है, लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेलिंग woolen and I am selling it in Delhi during the April time, the location is completely not falling into my segment. Growth potential क्या होता है वो भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट इज प्री अप्रोच। प्री अप्रोच क्या होता है कि जब मैं अपने कस्टमर से मिल रही हूँ, अपने प्रोस्पेक्ट से मिल रही हूँ, आई शुड हैव अ लॉट ऑफ लर्निंग अबाउट माय कस्टमर। सो it is a process of learning as much as possible about my prospect. I should be able to identify the needs, who is involved in buying, the characteristics, the buying behavior. So objectives क्या होते हैं? I should first qualify the prospect, gather information and make an immediate sale. Approaches क्या हो सकती हैं? Personal visit कर सकते हो, phone call कर सकते हो, या एक mailer भेज सकते हो। Now the next step is approach. Approach वो प्रोसेस है जब सेल्स पर्सन डायरेक्टली अपने प्रोस्पेक्ट से, उसने प्री वर्क कर लिया है, डायरेक्टली अपने प्रोस्पेक्ट से मिल रहा है, उसको मीट कर रहा है, ग्रीट कर रहा है, एंड देयर इज अ स्टार्ट टू अ कस्टमर रिलेशन एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या क्या होता है? कस्टमर का ओवरऑल लुक एंड फील, उसका अपीयरेंस क्या है, हाउ इज ही कम्युनिकेटिंग अबाउट द प्रोडक्ट, उसकी ओपनिंग लाइंस क्या हैं, और फॉलो अप रिमार्क्स क्या हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द सेल्स पर्सन इज जज्ड अपॉन ऑल दीज थिंग्स। नाउ ओपनिंग लाइंस दे शुड बी वेरी पॉजिटिव। इट शुड बी, जब आप अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के बारे में बता रहे हो, बहुत पॉजिटिव आपकी ओपनिंग लाइंस होनी चाहिए, एंड दैट opening lines should also have a balance. ऐसा नहीं है कि just वो positive opening lines होनी चाहिए, they should also have a balance. Those opening lines should be able to build the goodwill and should be followed by key questions to learn about the customer needs, or showing a display or a sample to attract buyers' attention and curiosity. At this stage, the most important attribute for a salesperson is to listen what the customer is wanting. हमने बात की थी कि ये मिस्टेक कस्टमर एक सेल्स पर्सन करता है कि वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलता रहता है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द अप्रोच थिंग, हमारे को कस्टमर की भी सुनना है, क्योंकि उससे भी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को गेज कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका प्रेजेंटेशन। सो प्रेजेंटेशन क्या है? इट इज व्हेन द सेल्स पर्सन इज टेलिंग अबाउट द प्रोडक्ट स्टोरी टू द बायर, कस्टमर्स को बेनिफिट्स बताता है, की वैल्यू प्रोपोजिशंस बताता है,
वो बताता है कि हम प्रोडक्ट की कस्टमर की प्रॉब्लम ये प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करता है। तो उसकी डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। फर्स्ट इज योर नीड सेटिस्फैक्शन अप्रोच। सो इस केस में क्या होता है, जो बायर होता है उसको सोल्यूशंस चाहिए होते हैं अपनी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो सेल्स पर्सन को पहले उसको इफेक्टिवली सुनना होता है और फिर रिस्पॉन्ड करना होता है राइट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से, सो दैट हिज प्रॉब्लम इज सॉल्व। सो दैट इज योर नीड सेटिस्फैक्शन अप्रोच। अगेन हमने बात की है कि कुछ बैड ट्रेट्स जब हम प्रेजेंटेशन भी कर रहे होते हैं, डिसऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए, अनप्रिपेयर्ड नहीं होना चाहिए, पुशी नहीं होना चाहिए, डिसीटफुल नहीं होना चाहिए। एंड द सेल्स पर्सन, दे शुड बी गुड लिसनर्स, दे शुड बी एम्पैथेटिक, ऑनेस्ट, डिपेंडेबल, थॉरो, एंड दे शुड बी डूइंग अ प्रॉपर फॉलो अप। फिर प्रेजेंटेशन हो गई, आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया कंज्यूमर के, उनकी नीड को, उनकी, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर एट दैट टाइम, यू हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर इज वांटिंग। फिर ऐसा तो नहीं है कि आपने कस्टमर को बस बता दिया एंड ही इज सैटिस्फाइड। डेफिनेटली देयर वुड बी सर्टेन ऑब्जेक्शन कि कस्टमर पूछ सकता है कि हम आपका प्रोडक्ट क्यों लें, आपके कॉम्पिटिटर तो उससे सस्ता दे रहा है, या इसमें ऐसे क्या फीचर्स हैं, इसकी फॉलो अप क्या है, इसकी आफ्टर सेल सर्विस क्या है। सो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्शंस। सो सेल्स पर्सन को वो ऑब्जेक्शंस को डील करना is the next step, which is handling objection, and the salesperson has to be very smart enough to identify those objections. So वो objections कई बार unspoken भी हो सकते हैं, तो आपको कंज्यूमर का बिहेवियर, उसकी साइकी को समझ के you have to identify those questions. Those questions can sometimes be very logical, sometimes can be illogical. So आपको वो बहुत ही maturely as a salesperson you need to handle those objections. उसके बाद आपने ऑब्जेक्शंस हैंडल कर लिया, क्लोजिंग हो गया, सेल्स पर्सन को समझ आ गया कि बायर को प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, ही इज टुवर्ड्स क्लोजिंग ऑफ द डील। तो कैसे कैसे आपको इंडिकेशंस मिल सकते हैं, कुछ आपस में कमेंट्स कर रहा है, क्वेश्चंस कर रहा है, कुछ ऐसे एक्शन कर रहा है विद इन द फैमिली की यस वी कैन बाय द प्रोडक्ट, इट इज गुड। सो योर फेशियल एक्सप्रेशंस वुड टेल अ लॉट ऑफ थिंग्स टू द सेल्स पर्सन। एंड हमने जैसे बात की थी कि कई बार सेल्स पर्सन को पता नहीं चलता कि हमें क्लोज कब करनी है। सो ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे पूछेगा कि हमें इसकी परचेज करनी है, इसमें क्या डिस्काउंट मिल सकता है, हम पैसे कैसे दें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, कितने दिन में डिलीवर हो जाएगा। सो ऑल दिस क्वेश्चन वुड टेंड यू टेक टुवर्ड्स द closing part of your sales. So you should be very smart and identify those points and close the sales. क्योंकि इसके बाद भी अगर आपने linger on कर लिया या पहले खत्म कर दिया तो आपकी sales deal वहीं खराब हो सकती है। Then follow up is the last step in which the salesperson follows after the sale to ensure कि customer satisfaction है और repeat purchase हो रही है, ठीक है। So this was the process of your personal selling, prospecting, qualifying, pre-approach, approach, presentation, handling objections, closing the sales and follow up, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? Any doubt anyone is having? ठीक है। So before we wind up, we'll just do the last topic, that is recruitment and selection of the sales force. तो जब हम recruitment and selection of the sales force की बात करते हैं तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हाउ डू आई डू द राइट सेट ऑफ रिक्रूटमेंट, हाउ डू आई डू द गेट द राइट सेट ऑफ पीपल। सो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होंगे आपके? आप अपना न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में डाल सकते हैं, लेबर एक्सचेंजेस में डाल सकते हैं,
कंपनीज को, प्लेसमेंट्स, कॉलेजेस को, स्कूल्स को विजिट कर सकते हैं फॉर प्लेसमेंट असिस्टेंट्स। एक्टिव एप्लीकेंट्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू आप एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। ये आपके एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हो जाते हैं। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में एम्प्लॉय ट्रांसफर, एम्प्लॉय रिकमेंडेशंस, ये सब होती हैं। नेक्स्ट होता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में यू कैन ईदर गो फॉर अ प्री सिलेक्शन इंटरव्यू। बहुत सारे कैंडिडेट्स आपकी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो एक प्री सिलेक्शन इंटरव्यू हम कर सकते हैं, सो दैट हम अपना पूल को कम कर सकें। एट द वेरी बिगनिंग वी कैन डिसक्वालीफाई द कैंडिडेट्स हु आर नॉट कॉम्पिटेंट। जॉब एप्लीकेशन फॉर्म हम मंगा सकते हैं। उसके बाद हम इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यूज हमारे बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज दैट आर देयर। वी हैव द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, वी कैन गो इन फॉर एन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, वी कैन गो इन फॉर अ स्ट्रेस इंटरव्यू। देन सिलेक्शन टेस्ट भी हम ले सकते हैं। देयर कैन बी 2 मेथड्स। सो हमारे IQ टेस्ट हो सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकते हैं, interest exams, personality test, all these things we can take up. Then we can make a list of the shortlisted candidates. We can go in for their background check, we can go in for their medical examination, and अगर ये सारे steps clear हो जाते हैं, then we can give a notification letter to the prospective employers को हम एक employment letter दे सकते हैं, and we can tell him to join a board, and then उसको हम, when the candidate joins a organization, he goes through an induction program, so that is socialization and assimilation. So these are the steps of recruitment. Again, it is important from your examination point of view as well. Okay, any doubts anyone has till now? Any doubts? यहाँ तक जो हमने पढ़ा है आपको सब क्लियर है? So I hope this is clear to you all. But फिर भी आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि there are certain topics, there are some things which you need to do again, कोई ऐसा topic जो कि हमें repeat करना है, वो हम will take it up all at 2. 1 to 2 will take a break, so that when we join again, you can have your lunch and all. So we join afresh. इसमें after the session, after this 1 hour of session, I'll make you go through the SLM. एक बार हम SLM का run through करेंगे. SLM में भी सारे similar topics ही हैं, हमने syllabus से भी match किया था, बट एक आधा कोई टर्म, कुछ स्पेसिफिक थिंग जो आपको लगता है कि मिस आउट हो गई है, उस पर हम एम्फेसाइज करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं थ्रू आउट द सेशन, उस पर और एम्फेसिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं वो डिस्कशंस करेंगे। एंड एट द सेम टाइम, इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, विल शेयर दैट in the next class. So I would request you to come with some writing material with a paper and pen, क्योंकि अगर हम important questions discuss कर रहे हैं, case studies को attempt कैसे करना है, तो I will give you some time to attempt on your own, and then we can take this ahead. ठीक है? I hope this is clear to you all. ठीक है, so let's meet at 2.
अरे भाइयों आज क्लास होगी नहीं होगी?
Good afternoon, everyone. So yeah, in the previous session, we have talked about the major concepts. We have talked about the sales force management, what is the role, what is sales force management. We have talked in detail about personal selling, what is personal selling, the process of personal selling. We have talked about the process of selection, recruitment, and training, motivating the employees, the process of training the employees. Then we have talked about compensating and motivating the sales force management. And then we have talked about how do we evaluate the sales performances, about keeping in the various kinds of records and all those things. And we have also talked about sales territory, sales quota, how to set up the sales quota, sales targets, sales territories. Then we have also talked about the need for sales force management, needs for sales force training. So we have covered the major topics, and if you have any doubts regarding the earlier session that we have taken up, yeah, please feel free to discuss those questions. Ma'am, can you brief personal selling? Personal selling, you want me to do it again? Yeah, brief, only briefing. What? You want to Only brief if possible. briefly, you want to repeat me the topic of personal selling or the process of personal selling? What do you want me to repeat? Personal selling overall. Overall. So you were not there in the last class? Yeah, I was, but a bit of network issue, maybe from your side or my side, I don't know. Okay, there was no network issue because other people were interacting. Probably it was from your side, but nevertheless, Wait from I my will side. repeat it. कोई बात नहीं. I'll repeat it once again if you want. So let me share the presentation once again with you. Yeah. Yeah, sure. Just a moment. Are you able to see the slides? Yes, ma'am. Okay. So repeating in brief about the personal selling. So personal selling, it is an important component of my promotion mix. I hope you understand what is a promotion mix. Promotion mix पता है आपको क्या है? Yes, ma'am. Thora. Acha, so promotion mix is basically, it consists of all the tools and techniques wherein जो marketer hai, he is able to communicate his offerings, he's able to promote the product, and it is like a talking between the consumer and the organization itself. So there are a lot of elements when we talk of the promotion mix. Promotion mix may we talk of advertising, promotion mix may we talk of sales promotion, public relations, personal selling, digital marketing, online marketing, and all these other tools जिसके through हम अपने product को consumer तक बताते हैं. The personal selling is an important part of my promotion mix, and personal selling is one of the most important tools and one of the most effective tools in today's time, which is helpful in the promotion, which is helpful in the revenue generation, which is helpful in the sales, right? So what is personal selling? Personal selling is involving oral communications. These communications can be either by telephone or face to face, and it can be between the salespersons and the customers itself. ठीक है, तो
there is a person from the company's side who is doing the talking, who is telling about the product, who is telling about the services to another set of people who are your consumers. So he's basically the face of your organization, right? ठीक है? Personal selling क्या होता है? Personal selling किस चीज में contribute करता है? So personal selling, it would help you to generate revenue. It would help to provide market research and customer feedback. Market research and customer feedback, how does it help to do that? Because when we talk about personal selling, the person who is there from the organization, who is a personal seller, वो consumer के साथ, he is in direct contact with the consumer. So whatever reactions are there, whatever queries, whatever sentiments are there of the consumer, that immediately goes to the salesperson. So he can take away the audiences, the consumer sentiments, and then deliver it to the organization. ठीक है? Or it helps in providing solutions to the problem. So for example, हमने पर्सनल सेलिंग के वक्त डिस्कस किया था कि कोई अगर कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स हैं, कंज्यूमर की issues हैं, for example, I want to purify, I see there's a lot of air pollution out there, I visit a chroma outlet and I tell the shopkeeper, I tell a personal seller there ki, yeah, that there are a lot of air pollutants out there. So he could solve my problem by telling me about the different kind of air purifiers that are there in the market, and then depending upon what kind of air purifier I want, what kind of pricing I want, I can, the personal seller can solve my problem. So this is how a personal seller can do that part of the problem solving and a solution providing to the consumers. Also, salespersons, they provide expertise and they serve as information sources. How is this so? Salesperson, they can provide information and expertise. ऐसा क्यों? ऐसा कैसे कि आपको कोई भी issue है, कोई भी problem है, उसके regarding particular product के regarding एक particular product or service के regarding, they can give you that particular knowledge, they can give you that particular experience to the customer. Okay. Or salespersons, they are advocates for the customer when dealing with the selling organization. They are basically they are the spokesperson, they are the people from the organization side who are informing, who are telling the customers about the products that are there in the market. So this was a brief about the personal sellers and the personal selling. Is it fine with you? यस मैम, फाइन, वेरी गुड। मैम मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, पर्सनल सेलिंग और जो सेल्समैन होते हैं इसमें कुछ डिफरेंस होता है? नहीं, पर्सनल सेलिंग एक प्रोसेस है और जो लोग उसको करते हैं वो सेल्स फोर्स में आ जाते हैं, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट बोल सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को। सेल्स मैनेजर एक जो बंदा है जिसके अंदर बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं ये सारी। ओके, ठीक है, ठीक। और कोई डाउट? अभी तक तो नहीं। ठीक है। अब मैं अब क्या करूंगी, मैंने लास्ट क्लास में भी, लास्ट सेशन में भी आपको बताया था कि अब हम मैं आप लोगों के साथ हमारा जो SLM है हम उसको शेयर करेंगे और एक बार वन बाय वन रिकैप्चुलेट कर लेंगे कोई कोई टॉपिक्स। मेजरली हमने सारा कवर अप कर लिया है, बट अगर हमें ऐसा कोई लगता है कि जैसा आपने अभी पर्सनल सेलिंग दोबारा बोला, अगर किसी और को या आपको किसी को भी लगता है दैट वी नीड टू टेक अप दैट टॉपिक अगेन, तो वो हम कर सकते हैं। और उसके बाद हम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, किस तरह का हमारा पैटर्न आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, वो सब डिस्कस करके फिर आपका अगर कोई डाउट है, अदरवाइज वी विल वाइंड अप विद द क्लास। ओके ओके, so I'll be sharing the SLM with you over the screen. SLM दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो let's move ahead. So this is the first unit, first chapter.
जिसमें हमने वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज अ सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, सेल्स स्ट्रैटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी क्या होती है, हमने अभी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है. तो यू शुड नो व्हाट इज अ सेल्स स्ट्रैटेजी, व्हाट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी. हमने ये भी डिस्कस किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स कैसे लिंक्ड होते हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए. सेल्स स्ट्रैटेजी का हम फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, हमने बात की थी कि हमारे को ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने होते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स पे हमें प्रोडक्ट की, प्राइसिंग की, हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन प्रोसेस अगर हम एक बार इसमें देखें तो सबसे पहले वी नीड टू एनालाइज द मैक्रो एनवायरनमेंट. मैक्रो एनवायरनमेंट में हम सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, जिसको हम पेस्टल एनालिसिस बोलते हैं, उसको हम देखते हैं. उसके बाद हमारी राइवलरी सिचुएशंस क्या है, कंपनीज गोल क्या है, हम उसको एनालाइज करते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं. फिर हम अपने मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली वी आइडेंटिफाई देम, एंड उसके बाद वी डिजाइन द स्ट्रैटेजी ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने पास्ट में अभी लास्ट सेशन में देखा था, सेल्स एफर्ट, सेल्स पर्सनल रिक्वायरमेंट, सेल्स फोर्स का साइज क्या होता है, डिजाइनिंग ऑफ द टेरिटरी, channel support, coordination, and then we design the strategy on the basis of the following things. ठीक है, तो analyzing the competition is very important whenever we are strategizing anything. ठीक है, फिर से हमने जैसे लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में भी अभी डिस्कस किया था कि सेल्स ऑब्जेक्टिव्स हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सेल्स वॉल्यूम पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इन चीजों पे करते हैं. किस टाइप का हमें सेल्स फोर्स चाहिए, तो अगेन हमारे को करेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट के कैसे हैं, हमारे कस्टमर्स कौन है, हमारा चैनल क्या है, बेसिकली हमारे को 4 पीस के अराउंड ही अपनी सेल्स फोर्स को डिजाइन करना होता है. सो ये सारा वो सिचुएशन है. आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगे कि आपको डिस्कस करना है, कि यू कैन स्टॉप मी देयर एंड देन. फिर नेक्स्ट चैप्टर अभी हमने डिटेल में बात की थी. सो वी शुड ऑल नो द व्हाट इज पर्सनल सेलिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, इवन सेल्स फोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट क्यों होती है, पर्सनल सेलिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वी शुड ऑल नो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. फिर ये पर्सनल सेलिंग का प्रोसेस जो कि अभी हमने लास्ट क्लास में किया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग. ये देखिए, प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग, प्रोस्पेक्शन, प्री अप्रोच, अप्रोच, प्रेजेंटेशन, ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस और चैलेंजेस एंड क्लोजर. सो ईच स्टेप यू शुड नो इन डिटेल. हर स्टेप में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ऑल दिस थिंग्स यू शुड नो वेल इन डिटेल. यहाँ तक किसी को कुछ दोबारा से पूछना है? नो मैम. एनीवन? ठीक है, लेट्स मूव अहेड. एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग, इफेक्टिव सेलिंग टेक्निक्स, ये सब आप लोगों को डिटेल में और अच्छे से पता होनी चाहिए. Then salesmanship, what is salesmanship? What is salesmanship, anyone? सेल्समैनशिप भी जब प्रोसेस वेयर यू आर सेलिंग, तो सेल्समैनशिप क्या होती है इसमें? इट इज बेसिकली अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी in which the person is introducing, he is persuading the product or service to the prospective customer. जैसे हमने बात की थी, आर्ट और साइंस दोनों है सेल्समैनशिप. सेल्समैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स क्या होती हैं?
this you should know. Role of a salesperson you should know in detail. नीड क्या होती है सेल्स फोर्स, सेल्स मैनेजमेंट, इसकी नीड क्या है। ये एक डायग्राम दिया हुआ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एक वाइस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेलिंग, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, कैसे कैसे उसमें हम सेल करते हैं। रीजनल और एरिया मैनेजर, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, फिर मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं, देन वी हैव एरिया और रीजनल मैनेजर्स, देन वी हैव सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, field sales officers and sales representatives. So it is not a very standardized format. The organizational part of the sales, the organization structure might differ from company to company. तो matrix organization, geographic sales organization, product के according specialization, ये भी हमारी different types of sales होती हैं. Then sales for recruitment planning, again very important from your examination point. So you should know what are the two sources of recruitment. एक होता है हमारे external sources of recruitments, जिसमें we include all the sources which are outside of your organization, like your newspaper, advertisement, labor exchange, school interviews, competing sellers, active applicants, online resources. And then we have internal recruitment sources that are within your organization. So ये भी मैंने अभी pre break जो आपका session था उसमें हमने इसको discuss किया था. Then you should know what are the selection procedures. You should know in detail about each of the selection procedures that are there. How is the onboarding done? Salesforce training क्या होती है, उसके fundamentals क्या होते हैं, क्यों हम Salesforce training करते हैं, what are the various steps that we take on while doing a Salesforce training. We need to do a need analysis at a group level, at a individual level. What are the processes we have discussed in detail in the pre-session. This is also mentioned in your SLM. Any kind of doubts or confusions, we can discuss it here. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? I think I should move ahead. Then we are talking about directing the sales force. Operations को हम कैसे कर सकते हैं? What are the functions? How do I motivate? What are the reasons for low motivation in the sales employee? You should know that. Then how do we motivate? How do I as a manager increase the morale, boost the morale, extrinsically, intrinsically? What are the various ways I can do motivation, what are the various compensation plans? ये सारी चीजें हमने pre session में भी discuss की थी. These are all there in your SLMs. What are the motivation techniques? How do I compensate the employees? What are the various successful compensation schemes? What are their advantages, disadvantages? ये सब भी हमने detail में अभी किया था. Again mentioned in your SLMs. Then we talked about sales quotas, volume के basis पे, revenue के basis पे, sales territories हम identify करते हैं. ये भी अभी हमने pre session में इसको discuss किया था. Sales territory का role कैसे रहता है? How are these strategically assigned? These are all there in your SLM. Okay. Now the last chapter here is evaluating and controlling the sales effort. So whenever we are talking about motivating, recruiting, selecting the sales force, we are also liable to understand the sales efforts. तो उसको हम evaluate कैसे कर सकते हैं, reporting कैसे कर सकते हैं, ये सब भी हमने अभी प्री सेशन में किया था, आपके SLM में भी mentioned है. So अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो हम इसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं. इसमें सारे मेथड्स लिस्टेड है. ठीक है. So now we have also done a mapping of all the topics from your syllabus,
from the discussion, from the revision session, and I have also helped you map those things in your SLM कि आपको पता रहे कि आपको SLM से वो चीजें कहाँ कहाँ से पढ़नी है. So I think this is clear to everyone. Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? So now I will in brief recapitulate whatever we have done in today's class. We started first we started with the mapping of the syllabus of the Salesforce management, which is your MBA FT 7605. Through a presentation, we have discussed the various concepts of Salesforce, the need for Salesforce, personal selling, the need for personal selling, the process of personal selling. We have talked about the motivation, morale boosting, compensation, and we have talked about the training and development of sales employees. We have talked about the strategic, how do we analyze the competition that is pertaining in the market. We have talked about the selling situations. We have talked about the sales territories. We have talked about developing the sales quota, the various sales quotas. We have touched upon the recruitment selection part of the sales employees. We have touched upon. We have talked in detail about the training. What is training? How do we discussed the training. Then we have talked about evaluation. How do we evaluate the budget, the sales budget, and how do we evaluate the performance of the sales employee. So we have discussed about all these topics. Then we took up certain problems from your side which were there. Then all these topics were now mapped. There was a run through your self-learning material so that you could place the important topics in the self-learning material. Okay. Now the forum is open for any kind of discussions, any kinds of topics you want to repeat. Anyone? मैम बुक से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन नहीं है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है, अगर आप परमिशन देंगे तो मैं पूछूं। बुक से रिलेटेड मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सब्जेक्ट तो मार्केटिंग ही है, ये मार्केटर मार्केटिंग की ही बातें होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनिशियल स्टेज पे जैसे मेरा छोटा मोटा काम है, तो मान लीजिए मैं पेन बनाता हूँ, तो अपने प्रोडक्ट को मैं ट्रेडमार्क से लेके और ब्रांड एस्टेब्लिश करने तक और इसको डिस्ट्रीब्यूशन तक या फिर गवर्नमेंट को सेल करने तक, इनका प्रोसेस क्या है और कैसे करना चाहिए। इनिशियल स्टेज पे मान लो मेरे पास 5 एम्प्लॉय है, 5 एम्प्लॉय के साथ मैं काम करता हूँ और इसको मैं आगे कैसे बड़ा लेके जाऊँ, इसके बारे में आप कुछ बताएं तो। आई थिंक ये फिलहाल हम अपना डिस्कशन इसके अराउंड ही रखते हैं। अगर आपको इस तरह का कोई डिस्कशन करना है तो डेफिनेटली आई एम अवेलेबल इन एसओएल, आप कभी भी आके मिल सकते हैं। यू कैन टेक माय ईमेल आईडी, उस पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। वी शुड नॉट, क्योंकि अभी दिस इज अ स्पेसिफिक रिवीजन क्लास फॉर सेल्सफोर्स मैनेजमेंट। उसके अराउंड अगर आपको कोई डाउट है तो आई कैन टेक दैट अप। एसएलएम से रिलेटेड तो मैम कुछ भी नहीं है, क्योंकि मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक आप चाहते हो कि मैं दोबारा सेल्सफोर्स मैनेजमेंट से अगर आपको कोई भी डाउट है, डेफिनेटली आई विल एंटरटेन अदर थिंग्स रिलेटेड टू मार्केटिंग, बट फिलहाल हमारा क्लास इट इज रिलेटेड टू सेल्सफोर्स मैनेजमेंट रिवीजन क्लास, तो आई वुड वांट कि हम अभी फिलहाल उसी पे फोकस करें।
ठीक है मैम, अभी तो मेरे पास कुछ ऐसा लग नहीं रहा, कुछ क्वेश्चन ठीक है, तो एक बार आप लोग भी अपना मटेरियल को गो थ्रू करेंगे, इस क्लास का रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो वो है। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट पैटर्न्स का पेपर का, हाउ इज योर पेपर, तो आप लोगों ने पास्ट पेपर्स दिए हुए हैं, तो यू शुड बी नोइंग कि हमारा पैटर्न कैसे रहता है पेपर का। आई होप एवरीवन नोज। So it is a theory paper, and the theory paper, it is of it will be of 3 hours and it will be of 70 marks, and आपका पार्ट ए पार्ट बी में पेपर डिवाइडेड होगा। पार्ट ए will be a application based or a case study based question which will be compulsory, which would be of 20 marks। पार्ट बी में आपके पास क्वेश्चंस के ऑप्शंस होंगे जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, टेस्टिंग योर नॉलेज ऑफ सेल्सफोर्स मैनेजमेंट, राइट। सो किस तरह से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, थियरी क्वेश्चंस को। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाइल वी आर अटेम्प्टिंग अ थियरी क्वेश्चन, हमारे को ध्यान रखना है कि हमारे पास we are writing the content that we have studied in theory. Even if it is a case based or an application based question, we have to relate it with the content that is there in the theory. ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि हमारे को जो भी हम थ्योरी लिख रहे हैं, वी शुड ट्राई एंड कीप इट इन पॉइंटर्स फॉर्म एंड हाईलाइट। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अ क्वेश्चन दैट व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट what is the importance of Salesforce management? For example, it is a very basic question. तो अगर मैं उसके बारे में आपको बता दे रही हूँ, तो आपको brief में you have to tell me what is a Salesforce management, and then one by one, depending upon the marks of the question, you should write ये point and then highlight the point. So the more legible, the more presentable you are going to make it, the more easily you would be able to fetch the marks. Most of the questions that we would be giving you would be application based questions, and also if I am providing you a case study based question, so you can take some data from that case study, but do not forget to link that question to the theory part। ठीक है। So now some of the questions, for example, there is a question which says that a sales team is highly demotivated because they are not able to take up the right set of sales. They are not able to fulfill their targets. As a sales manager, what measures will you take to motivate your team? तो आप इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे? How will you attempt this question? So in this question, it is basically talking about motivating the sales force. And first, what you have to write down, why, what are the reasons of, you should give some focus on what are the reasons of demotivated sales employee. Then as a manager, what steps are you going to take up? So you're going to talk about compensation, you're going to talk about intrinsic motivation, extrinsic motivation techniques, financial incentives, and all these things that we have discussed. तो इस तरह से पहले आपको क्वेश्चन को देख के अपना कॉज आइडेंटिफाई करना है, and then you have to write it in pointers form and highlight the major things.
So anything else you want to ask from Salesforce management? Okay then, thank you everyone and all the best for your exams. Thank you, ma'am.